राधे राधे एवरीवन। आज हम सीखेंगे एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। सो एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम ये तीनों ही मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें एनालाइज करने में नंबर्स को या फिर कैलकुलेशन करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा इज इक्वल टू एवरेज, हमने दिया एवरेज, तो हम गए इस पे टैब प्रेस किया, इट ओपन्स द राउंड ब्रैकेट्स, हमने दिया 10, 20 और 30 को एज आर्ग्यूमेंट्स, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। सो उसका एवरेज आ गया 20। हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 10 प्लस 20 प्लस 30, राइट। इन तीनों को करेंगे, दिस इज हाउ वी डू इन मैथ्स, राइट। तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 20 आ गया। फिर अगर हम मिनिमम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टैब प्रेस किया, हमने लिखा 10, 20 और 30 एज दी वैल्यूज इन आर्ग्यूमेंट्स, और तो हमें मिनिमम मिल गया 30। मिनिमम मतलब हो गया लोएस्ट वैल्यू, फिर इज इक्वल टू मैक्स, मैक्स मतलब हाईएस्ट वैल्यू। हम पढ़ भी सकते हैं इसकी टिप, व्हिच सेज इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड इट इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। I'll explain the meaning of this line in the tip ignores logical values and text later. Now in arguments we give 10, 20 and 30. We close a round bracket, and so what we see, the maximum value is 30, so it should return 30. तो 30 आ गया। सपोज हमारे पास एक डेटा है सेल्स का, राइट। सो हमारे पास डेटा है 100, राइट, 150 and 200 and 250, right? This is the data and we have to calculate average, minimum and maximum. So what we'll do is equal to average tab, we'll select D2, control shift down arrow key, we go up till D5, close the bracket, so this will give us average. So average आ गया 175. Now minimum के लिए is equal to MIN, we press tab, we again select D2, D2 and control shift करके down arrow key से will go up till D5, close the bracket, तो ये हमें दे देगा minimum value, मतलब the lowest value which is 100, तो हमें 100 मिल गया। is equal to max tab, we'll select again D2, फिर control shift down arrow key, 250 तक पूरी range select हो जाएगी। You can directly hit enter, there is no need to first put the round bracket and then hit enter, directly hit enter. So the largest or the highest value was 250, तो हमें maximum में 250 मिल गया। Now we will understand कि जब हम अभी टिप पढ़ रहे थे तो मिनिमम में the tip says returns the smallest value in a set of values and ignores logical values and text. We will understand the meaning of this line. Suppose हमारे पास एक डेटा है, data is 10, 20, hello and 30. Also there is one more thing to notice in Excel कि जो numbers होते हैं जैसे 10, 20 numerical values and they all are right aligned, and जो textual value है hello वो left aligned है। Coming back to average, minimum and maximum, suppose अब हमें इनका average, minimum और maximum निकालना है। तो अगर हमने अब एवरेज निकाला, ठीक है, एवरेज मैंने सिलेक्ट करा D7, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, तो D10 तक मिल गया। इस पूरे डेटा का हमें एवरेज निकालना है, बट इसमें एक चीज है कि इसमें एक टेक्सुअल वैल्यू भी है। तो ये क्या करेगा, अब इस टेक्सुअल वैल्यू को इग्नोर कर देगा। अगर हम 10, 20 और 30 का एवरेज निकालते हैं तो ये क्या करेगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 3, तो हेलो इज कम्प्लीटली इग्नोर्ड क्योंकि वो एक टेक्सुअल वैल्यू है। सिमिलरली मिनिमम और मैक्सिमम में भी यही होगा। तो अगर हम इज इक्वल टू मिनिमम करते हैं और 10 से लेके सॉरी मिनिमम करते हैं राउंड ब्रैकेट एंड देन विल सिलेक्ट D7 एंड अप टिल कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से D10 तक हमने सिलेक्ट कर ली पूरी रेंज, क्लोज किया हमने ब्रैकेट को। तो हमें अब क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू, एंड द हेलो वैल्यू जो टेक्सचुअल वैल्यू है वो इग्नोर हो जाएगी। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 10 आ गया। इज इक्वल टू मैक्स, अगेन टैब, वी सिलेक्ट D7, we go control shift, we go up till D10 and then we close the bracket. Now we hit enter, so we get the highest value which is 30. Again the textual value is ignored. तो जो टिप में जब हम पढ़ते हैं is equal to, जब हम लिखते हैं is equal to MIN, तो यहाँ पे we can see it right returns the smallest value number in a set of values and it ignores logical values and text. So this is what it means कि अगर you are performing minimum, maximum or average on certain values which certain data which also has logical, or it also has logical values with the true false, and it has text,
and also along with it numerical values. So it will ignore the textual and the logical values, right? Now let's go to this average practice question. So we have the students and their exam scores. We have to calculate this average score of all the three subjects, right? Now what we'll do is equal to average tab. You can directly go to GeneMarks, Control Shift down arrow key, the complete range, close the round bracket, and then hit enter. So you get 78.6. Or you can also do what you can do is equal to average tab. Now first you can select all the maths marks. So you will go to B4, press shift, down arrow key, then again down arrow key. Our maths marks are selected. B4 to B6 is a range of marks for math subject. We press comma. Now coming again to the English marks, the second range. So we'll go to 90, B8, then shift down arrow key, then again down arrow key. So we have selected 90 से लेके 75 तक जो सारे इंग्लिश के मार्क्स हैं वो हो गए सेकंड रेंज B8 से B10 तक. Then again comma and we'll select this one cell which is B12 which is Sally's marks in additional. Now we'll close the bracket and again we'll calculate the average. So we see 78.6. तो पहले वाले जो मेथड था जिसमें हमने एंटायर रेंज सिलेक्ट की थी उसमें जो टेक्सचुअल वैल्यूज थी इंग्लिश और एडिशनल वो इग्नोर हो गई, right? Now coming to minimum and maximum practice. So what we see, this data has certain products, stationery items, file folders, paper, pens और उनकी quantity. इसमें हमें minimum और maximum value निकालनी है. So very easy. Is equal to min tab. We'll select B2, Control Shift and go up till B13. We'll close the bracket. तो इसमें हमें जो लोएस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे कम वैल्यू होगी वो आ जाएगी. तो हमें मिल गया 10. पेन्स की वैल्यू 10, ये सबसे लोएस्ट है. सिमिलरली हमें मैक्सिमम निकालना है तो इज इक्वल टू मैक्स टैब. ठीक है, हम आ गए B2 पे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की B13 तक सिलेक्ट कर लिया. हमने क्लोज किया ब्रैकेट को. हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू तो हमने करा प्रेस एंटर. तो इस पूरे वैल्यूज क्वांटिटी ऑफ वैल्यूज में 92 सबसे ज्यादा है जो कि है स्टेपलर्स की. सो दिस इज ऑल अबाउट मिनिमम मैक्सिमम. तो आज हमने सीखा एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये तीनों ही मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं. सो या प्लीज लाइक, share, subscribe my channel Let's Data, and I'll be meeting you in the next video with more formulas. Thank you.